السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ایک نئی لیسن سٹارٹ کریں گے. لیسن نمبر 6 پیج نمبر 61 پر ہے یہ لیسن. اس لیسن کا نام ہے دا پروڈیگل سن. پروڈیگل ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے، پیسے ضائع کرتا ہے، برے کاموں میں پیسے صرف کرتا ہے، برے کام کر کے اپنی دولت کو ضائع کرتا ہے. اسی کو ہم پروڈیگل کہتے ہیں. سن بیٹے کو کہتے ہیں. پروڈیگل سن مینس وہ بیٹا جو فضول خرچی کرتا ہے، زیادہ جو پیسے زیادہ ضائع کرتا ہے. پیج نمبر 61 پر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھولیے، ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہی اس کے معنی بھی بتائیں گے. The Prodigal Son. The Prodigal Son is a story of love and forgiveness of parents. یہ کہانی ہے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، کہ کس طرح وہ ایک بچے کو پیار کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ غلطیاں کرنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. They forgive. Even after we do whatever we bad do, وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ معاف کر دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. The Almighty has blessed, Almighty means God has blessed mankind with obscene bounties. Obscene means بہت زیادہ، numerous. Bounties means نعمت، reward. And blessings means انعامات. خدا نے ہمیں بہت سی رحمتیں عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی ہے. But the most valuable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. لیکن ان تمام نعمتوں میں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت والدین جو ہمارے پیرنٹس ہے ان کا سیلف لیس، جس میں کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے. لو، جو ہم سے وہ پیار کرتے ہیں بغیر کوئی غرض کے، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. کیئر، ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں. اینڈ شیلٹر، اور ہمیں جگہ دیتے ہیں. provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. یہ تو ایک سٹوری کا ایک طرفہ واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ سٹوری ہمیں خدا جو ہمارا آلمائٹی گاڈ ہے، اس کا جو اس نے ہمیں رعایت دی ہے، گریس دیا ہے، مرسی دیا ہے، جو ہمارے پیرنٹس میں انہوں نے پیار بھرا ہے، رحمت بری ہے، جس سے وہ پیرنٹس ہمیں پیار کرتے ہیں. دیٹ مینز یہ کہانی ہے والدین کی محبت اور خدا کی عظمت. یہ خدا ہی ہے جو ان والدین میں بچوں کے لیے پیار بھر دیتا ہے، بچوں کے لیے کیئر بھر دیتا ہے. اتنا پیار کہ اگر اولاد کوئی بھی غلطی کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ ماں باپ اس سے معاف کرتے ہیں، پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں. ریپینٹنس، توبہ کرنا، آن بہاف آف مین از دا اونلی وے ٹو اٹون فار دا سنس. لہذا ہمیں اگر ہم کوئی غلطی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، ہم ندامت سے بالکل اس غلطی کو چھوڑ دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اٹون مینز معافی مانگنا، درگزر کرانا.
Repentance on behalf of a man is the only way to atone for the sins. इस तरीके से हम अपने गुनाहों से पाक हो सकते हैं, साफ हो सकते हैं. Now let us read the story. आपको फिर बाद में अच्छी तरह समझ आएगा. There was a rich man who had two sons. एक अमीर आदमी था, उसके दो बेटे थे. He loved his sons very much, क्योंकि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं. यह भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. The elder son was hard working and obedient. जो उसका बड़ा बेटा था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और इताअत गुजार था, फरमा बरदार था और अपने माँ बाप की हर बात मानता था, उन पर अमल करता था. उसी को ओबीडिएंट कहते हैं. बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड. लेकिन जो छोटा बच्चा था, जो उनका छोटा बेटा था, वो कोई काम नहीं करना चाहता था, सिर्फ पैसे खर्च करना और ज़िंदगी में सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाना बगैर मेहनत करे, वो यही करना चाहता था. He wanted to live a life of absolute freedom. वो आज़ाद, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई काम नहीं, आज़ाद घूमना चाहता था. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. क्योंकि उसकी नज़र अपने बाप की प्रॉपर्टी, अपने बाप के जायदाद पर थी. वो सोचता था कि मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, मुझे पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है. मेरे बाप के पास तो प्रॉपर्टी है, मुझे प्रॉपर्टी बनाने की क्या ज़रूरत. मैं तो ऐश करूँगा, मैं तो घूमूँगा, खाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आज़ाद घूमूँगा, लिहाजा मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं ले लूँगा. He said to his father, एक दिन उसने अपने बाप से कहा, Father, give me the share of the property that belongs to me. उन्होंने अपने बाप से ये मांग की कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, जो मुझे हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, मुझे वो चाहिए. Inheritances were normally given when the father died. प्रॉपर्टी का हिस्सा तभी होता था जब बाप मर जाता था, तो फिर ये उसकी जो वरासत होती थी, जो उसका पैसा होता था, जायदाद होता था, उसको फिर हिस्से किए जाते थे कि जितने बच्चे हो. लेकिन उन्होंने बाप की मौजूदगी में ही प्रॉपर्टी मांगी, अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा. दिस brazen डिमांड, बेशर्म डिमांड, बदलहाज डिमांड, ये गुस्ताखाना हरकत, उन्होंने गलत बात कही है. For an early Dujan of estate was selfish and immature. सेल्फिश था, वो खुदगर्ज था. वो चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रखूं. एस्टेट मीन्स दिस जागीर, मिल्कियत जो उसके बाप की थी. लिहाजा उसका ये फैसला इमैच्योर था, ये गलत था, कच्चा फैसला था, नाकिस फैसला था. But the father divided his wealth between the two sons. लेकिन उनका बाप, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, उन्होंने उसको अपनी दौलत का हिस्सा दे दिया. आधी आधी जो उसके हिस्से में आई उसने उसको दे दी. पैसा था, बाकी प्रॉपर्टी थी, उसको दे दी. Now the second paragraph. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land. ये दूसरे मुल्क में गया, दूसरे शहर में गया. Where he wasted his money, जहाँ उसने तमाम पैसा ज़ाया किया. He lavishly dined, फजूल खर्ची की, खाना खाया, बड़े बड़े ये पकान बनाए अपने लिए. He lavishly dined, wined, शराब पी और gambled और
जुआ खेला पैसों से, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई. At last when he had spent even the last penny, लास्ट जो रुपया था, लास्ट जो पैसा था उसका, वो भी खर्च हो गया. He almost starved to death. अब जब दौलत ख़त्म हो गई, क्योंकि खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, अब उसके पास पैसे ही नहीं थे, लिहाजा उसको फाके बिल्कुल खाना ही नहीं मिला, तो उसको फाके की हालत में वो मरने को आ गया. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. कहत साली भी उस मुल्क में पड़ी जिससे जिंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो गई. घास भी नहीं उगने लगी, बिल्कुल बारिश खत्म हो गई, जिससे उस कंट्री में रहने ये ज़िंदगी बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गई, हार्श हो गई. या नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था. नो होम टू लिव इन, घर भी नहीं था जब वो रहे. एंड नथिंग टू ईट, खाने के लिए भी तो कुछ नहीं था. ही बैडली नीडेड अ जॉब, लिहाजा उसने सोचा कि मैं एक काम करूँगा, कोई काम करके थोड़ा पैसा कमाऊँगा, क्योंकि उसको काम करने का आदत भी नहीं था. सो ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री. एक आदमी के पास गया जो उस मुल्क में रहता था. उसको कहा कि मुझे नौकरी पर रख दो, मुझे तनख्वाह दे दो. Who sent him on his field to feed animals. उसने उसको नौकरी पर रखा. नौकरी क्या थी कि उसके जो एनिमल्स थे, उसके जो चौपाए थे, उसके जो गाय या बैल और जो एनिमल्स थे, घोड़े वोड़े, उन्हीं की निगरानी के लिए उसको रखा. He longed to make a meal of the pods the animals were eating. उसको कभी कभी इतनी भूख लगती थी कि वो जानवरों का खाना भी खाने लगा. पार्स, जिनको हम मटर वटर कहते हैं, ऐसे फली वली. The animals were eating but no one gave him anything. लेकिन उसको ये भी नहीं दिया जाता था. इसका मतलब ये है कि वो इतना मजबूर हो गया कि अब वो घास खाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि इंसान को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो कुछ भी खाता है. आगे क्या होता है, इंशाल्लाह we will read it, we will discuss it in the second lecture. Till that, goodbye.